So today is Monday, 12th of January, no, 16th of January 2017. We're here in Punjabi Bagh Yatra, Shri Chaitanya Charitamrita Madhya, chapter 9, text numbers 12 through 14. हरे कृष्ण। तो आज हम आपका स्वागत करते हैं। आज सोमवार है, 16 जनवरी 2017 और चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला अध्याय 9 और श्लोक संख्या 12 से 14 की चर्चा कर रहे हैं। So we're reading about Lord Chaitanya's tour of South India. हम श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्राओं के बारे में सुन रहे हैं। Se Sabha Vaishnava Mahaprabhura Darshane Krishna Upasaka Haila Loe Krishna Name. After meeting Sri Chaitanya Mahaprabhu, all those different Vaishnavas became devotees of Krishna and began chanting the Hare Krishna Maha Mantra. तो 12वें प्यार का अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के बाद वे सारे वैष्णव कृष्ण भक्त बन गए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। Text number 13. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Pahima. Krishna
Let's recite the Guru Paraparams, please. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vistaya Gurute Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Sri Saraswati Deve Gauravani Nityaname Sesha Sundurari Vaskata Deshitane Om Agina Kvinandasya Jnana Shalakaya Lakshon Ganatam Mena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mahaprishtam Sadhana Mena Bhutale Vandeham Sri Guru Sri Kamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sadhyatam Sahagana Raghunatam Tatam Samsiddharivam Sadvaitam Sadhutam Parikara Saitam Shivishtaketam Yedevam Sri Radha Krishna Param Sahagana Parikara Sri Krishna Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanda Namaste Kanjana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Suri Devi Pranamami Vanshavarupasya Prasindhu Devika Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare. So I see that several of the Vaishnavis and some of the gentlemen don't know these prayers. They did not know this Guru Parava because they're remaining silent. हरे कृष्णा। तो मैं देख रहा था कि कुछ वैष्णवियों को और कुछ यहाँ पर जो भक्त आए हैं उनको गुरु प्रणाम मंत्र नहीं पता था, इसलिए वो मेरे पीछे बोल नहीं पा रहे थे। So, I guess graphics are usually taken care of by Ramanjan Prabhu. So the point is that there should be at least 50 printouts of the Guru Parampara prayers so that our guests can learn them, because every single guest should learn them. Like this gentleman I've told several times, he must learn his prayers. He's coming regularly daily to the temple but does not recite the prayers. So महाराज कह रहे हैं कि सब भक्तों के लिए जो है वो प्रणाम मंत्र के मंगलाचरण के प्रिंट आउट निकाल कर वो दे सकते हैं ताकि वो याद कर सकें और उनको दोहरा सकें। They're very important. It is our only access to Sri Sri Radha and Krishna is through this Guru Parampara. That's why we recite these prayers. तो ये हमारा एकमात्र जरिया है कि हम राधा कृष्ण तक की उपासना कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं गुरु प्रणाम मंत्र के द्वारा, इसलिए उनको दोहराना बहुत जरूरी है। First through the Vaishnava Acharyas, then through Lalita and Vishaka, then Sri Sri Radha Krishna. तो पहले वैष्णव आचार्यों को हम की प्रार्थना करते हैं, फिर ललिता विशाखा जी की, फिर राधा कृष्ण की। And through Radharani we access Krishna. This is the process. Everyone is supposed to know that. And the only way one of the prominent ways we execute this proper etiquette is by the recitation of this prayer. It's not just a detail, It's not a detail. This is, you could say, foundational. It's foundational to our parampara to properly recite these prayers. तो ये हमारे भक्ति में जीवन का आधार है कि हमें प्रार्थनाओं को याद करें, उनको दोहराएं, और हम सबको जानना चाहिए कि हम राधा रानी के माध्यम से ही कृष्ण के पास जा सकते हैं। You understand, sir? क्या समझे इस बात को? This building has a foundation. Without the
the foundation, there cannot be a building. जैसे इस बिल्डिंग का जो है एक आधार है, एक नींव है, उसी तरीके से हमारी भक्तिगत नींव ये प्रार्थना है। Similarly, without these prayers as the foundation of our movement, we cannot have Guru Parampara. तो उसी तरीके से ये प्रार्थनाएं हमारे इस आंदोलन का नींव है, जो कि गुरु परंपरा So की many प्रार्थना है। times, Prabhupada told us, don't jump over, don't be monkey, don't jump over. तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आप बंदर जैसे जो है वो पूर्ववर्ती आचार्यों को के ऊपर पैर रखकर आगे ना बढ़े। Because some foolish initiates, they used to want to dive deep into the books of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur when, the quality of their japa was not even very good, and they want to read the books of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So Prabhupada came down to Sringa Guru, don't jump over, don't be monkey, don't jump over. तो कुछ ऐसे नौसंख्या दीक्षित भक्त थे जिनके इनका जब भी ढंग से नहीं हो पाता था, लेकिन वो शिला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर मानसी गुरुता उनकी किताबें पढ़ना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी नरसिंह गुरु के का किरदार निभाते हुए उनको ये डांटने लगे कि बंदर जैसे तुम जो है वो मेरे पार मत जाओ, मतलब मेरे माध्यम से मेरे गुरु के पास जाओ। So many fools and offenders have left this movement because they think that they can find something better than Prabhupada. You see? तो ऐसे कई ध्रुत और मूर्ख रहे हैं, अपराधी रहे हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को छोड़ दिया है ये सोचते हुए कि वो प्रभुपाद जी से ज्यादा जान सकते हैं। And I'll include our friends and brethren, sisters in the Gaudiya mission also. They're also bona fide Vaishnavas, but our biggest concern is not going outside of Gaudiya Vaishnavism. You see, I have to say our line specifically. हाँ, तो जो बाकी गौड़िया मठ हैं और इतने ऐसे भक्त हैं जो भी गौड़िया वैष्णव हैं, लेकिन हमें जो है गौड़िया वैष्णव से बाहर जाकर किसी और संप्रदाय में नहीं जाना चाहिए। So everyone must meditate on this. Don't jump over. तो हम सबको इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के ऊपर उनको लांगे ना। So this text 13, text 13, we'll read your translation. O Lord Ramachandra, descendant of Maharaj Raghu. हे रघुवंशी रामचंद्र, कृपया आप मेरी रक्षा करें। Kindly protect me. कृपया आप मेरी रक्षा करें। O Lord Krishna, killer of the Keshi demon. हे केशी असुर को मारने वाले कृष्ण, Kindly protect me. कृपया आप मेरी रक्षा करें। So we used to nickname this the open road song. तो हमने इनका दूसरा इन प्रार्थनाओं का दूसरा नाम रखा था कि ओपन रोड सॉन्ग, खुली सड़क की गीत। Whoever goes, of course, most of our dormitories aren't here, but you sometimes go traveling book distribution, and whoever goes, you sometimes go, isn't it? On traveling book distribution, yes? Whoever goes, who else goes traveling book distribution sometimes? Oh, okay. So every time you go traveling, this should be your theme song, is it not? Do you do that anyways? You automatically sing this song every time you go out traveling? I mean, it's fine. We live for that, but I'm trying to say this mantra, is the open road song introduced by Chaitanya Mahaprabhu. तो महाराज कह रहे हैं जैसे खासकर जो संकीर्तन भक्त हैं जो अलग अलग जगह की यात्रा करते हैं या हम भी कहीं यात्रा पर जाते हैं, तो हमें ये गीत जरूर गाना चाहिए। In fact, long before most of you young people anyways were born, around 1969 or so, 1970. So that melody I was singing, that's the melody we used to sing in those days. तो ऐसे यहाँ पर कितने भक्त हैं जो कि उस समय शायद पैदा भी नहीं होंगे, 1969-70 की बात है। तो हम लोग जिस धुन में मैं ये गाया करते थे उस समय, उसी धुन में मैंने ये गाया। Way back and sometime in the 70s, a recording was made also, but it entered into history somewhere. It's not around anymore. और उस समय जो 1970 में हम गाते थे उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, लेकिन शायद अब उसको ढूंढना मुश्किल है। It's very nice for traveling. It just really makes everybody feel really good. Why?
और हम ऐसी यात्रा में जाएं और अगर इसको गाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? Because Mahaprabhu introduced it as the open road song. That's why he introduced it. तो क्योंकि महाप्रभु ने इसको जो है उसका उद्घाटन किया कि जब ऐसी यात्रा में जाए तो हमें ऐसी प्रार्थना, ये वाली प्रार्थना गानी चाहिए। महाप्रभु की यात्रा में ये प्रार्थना गाते थे। Text 14, and you'll see exactly why we nicknamed the open road song. तो 14 प्यार में हम और देखेंगे कैसे यात्रा का ये जो गीत है इतना प्रसिद्ध है। So we'll chant 14. Shloka pate pari karila parayana. Gautami Gangaya Yai Kaila Ganga Snan. Shloka pate pari karila parayana. Gautami Gangaya Yai Kaila Ganga Snan. Shloka pate pari karila prayan. श्लोके पथे पढ़ी करिला प्रयाण। Gautami Gangaya Yai Kaila Ganga Snan. गौतमी गंगाए जाए केला गंगा स्नान। Shloka pate pari karila prayan. श्लोक पथे पढ़ी करिला प्रयाण। Gautami Gangaya Yai Kaila Ganga Snan. गौतमी गंगाए जाए केला गंगा स्नान। Shloka
road, Sri Chaitanya Mahaprabhu used to chant this Rama Raghava mantra. मार्ग पर जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इसी राम राघव मंत्र का कीर्तन करते थे। Chanting in this way, he arrived at the banks of the Gautami Ganga and took his bath there. इस प्रकार कीर्तन करते करते वे गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्नान किया। So now you see why we nicknamed it the Open Road song. It started with Mahaprabhu. इसलिए हम कहते हैं कि एक तरीके से यात्रा का गीत है या प्रार्थना है, क्योंकि महाप्रभु स्वयं इसको कीर्तन करते थे। Ecstatically walking down the road singing this mantra. So if you're in your book van and you're going out traveling, or even if you're on your way to Vrindavan, sing this mantra. तो महाप्रभु बहुत ही आनंद पूर्वक जो है जब यात्रा करते थे इस कीर्तन को क्या करते थे, तो जब भी हम भी किसी यात्रा पर जाएं और गाड़ी में जाएं तो हमें भी इसका कीर्तन करना चाहिए। Meditate on Mahaprabhu and complete ecstasy, walking down the road, barefoot, simply thinking about Krishna and singing this mantra, carefree, no stress, no mental platform like us, just ecstasy. तो हम ध्यान कर सकते हैं कैसे महाप्रभु नंगे पांव हाथ ऊपर करते हुए और बिना किसी चिंता के इस कीर्तन को गाते हुए जा रहे हैं। So the Open Road song, you can see it's just like actually opening the heart. तो वास्तव रूप में ये एक ऐसा यात्रा का गीत है, प्रार्थना है जो कि हमारे हृदय को real freedom. Like in the Bhagavad Gita, Krishna mentions the regulating principles of freedom. तो ये जो है वास्तव रूप में हमें आजाद करने के लिए है, जैसे भागवत गीता में भी कहते हैं कि आजादी का तरीका बताते हैं। Real freedom is not being attached to grihas, certainly not. तो असली में जो आजादी है वो गृह से आसक्त होकर नहीं है। It's amazing how we all have attachments. हम सब जानते हैं कि हमारी कुछ न कुछ आसक्तियां हैं। I mean, I'm not going to knock it. Everybody, it's just a statement of fact. और ये बात एक तथ्य चीज है, मैं इसके ऊपर और छेड़ूंगा नहीं। During japa time in the morning, जब सुबह जपे का समय होता है, generally everybody has their favorite place to sit. हर किसी की एक मनचाही जगह होती है बैठने की। If somebody else is sitting in their spot, sometimes they're silently, at least mildly annoyed. Somebody else is sitting in my spot. तो अगर हम कहीं जिस स्थान पर बैठे हैं हर रोज अगर वहाँ कोई और आके बैठ जाए तो निश्चित रूप से हमको शायद बोले ना, लेकिन मन ही मन हमें कुछ ना कुछ आक्रोश होता है। So even brahmacharis can claim a spot on the rug in the temple room. Yes, this is mine. ब्रह्मचारी भी एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि जो मंदिर में स्थान में जो जप कर सकते हैं उनको अपना कह के वहाँ बैठ सकते हैं। You ever had that experience, Prabhu? क्या आपका ऐसा अनुभव रहा है प्रभु? No. नहीं। You're so advanced, you have no material attachments at all, no? Huh? तो आप इतने उन्नत हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि आपकी सारी आसक्तियां खत्म हो गई हैं। What is this shaking your head? What does that mean? Indeed, that could mean anything. He's saying yes, Maharaj. Oh, going like this means yes. So we all have these, subtle attachments, But this is the freedom song. महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। Isn't that real freedom? तो क्या असली में एक आजाद होने का अनुभव नहीं? When the material world dissolves, poof, isn't
that real freedom? इसमें ऐसा लगता है कि पूरा भौतिक संसार जो है खत्म हो गया है। You say, Maharaj, dream on. आप कह सकते हैं महाराज ये तो एक स्वप्न जैसा लगता है। No, the whole point is to realize that we're in a dream. असली में बात ये समझने की है कि ये सपना है। Krishna consciousness means to awaken from the false dream. और कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि हमें इस झूठे स्वप्न से उठाना। Like the mirage on the roads, we've discussed several times, that when it's very hot on the road, you could see it looks like water on the road. You know, somebody may even be so illusioned by that they may slow down because they think, oh, water is coming now, I have to slow down to 5 kilometers per hour. जैसे एक मृत तृष्णा हम देखते हैं सड़क पर, अगर हम जा रहे हो तो हमें दूर पानी दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि हमें आस्ते हो जाना चाहिए, रफ्तार को कम कर देना चाहिए। So this whole material world is a mirage. It looks like something, therefore we say that which is not. तो इसलिए ये पूरा भौतिक संसार उस मृत तृष्णा के समान है, माया का मतलब जो नहीं है। You try to experiment, those of you devotees who go traveling. When you're rolling along the highway and sing this song, you're going to feel like the whole material world just evaporated. You're not going to feel what material world. You're just going to feel like, wow, this is really amazing, you know. I'm saying this for no deities, means it can't be false. You try this experiment, and you're going to feel the truth of the statement, wow, this is real freedom. So आप इसका अनुभव करके देखिए कि मैं विग्रहों के सामने ये कह रहा हूँ कि अगर आप यात्रा पे कभी निकलें और ये कीर्तन करें खासकर, तो आपको ऐसा लगेगा पूरा भौतिक संसार जो है वो खत्म सा हो गया, उड़ सा गया, और आपको बहुत ही अच्छा अंदर से महसूस होगा। Then you understand why in the Bhagavad Gita Krishna says the regulated principles of freedom, because sadhana bhakti leads to freedom. तो जब आप ऐसा प्रयास करेंगे तो आपको अनुभव होगा जो भगवद गीता में कहते हैं कि हम कैसे नियमित रूप से उस आज़ादी तक जा सकते हैं, और जो है क्योंकि साधना भक्ति का मतलब ही यही है कुछ नियमों का पालन करना जिसमें हम असली स्वतंत्र हो सकें। And in case you think it's exaggeration that the entire Mahatava can practically evaporate, you might say, Maharaj, dream on. तो अगर आपको लगा है कि ये सब काल्पनिक बातें हैं और ये कुछ बढ़ा चढ़ा के कही जा रही हैं कि महत तत्व भी खत्म हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि महाराज ये तो कुछ ऐसी बातें हैं। But what does the Shastra say in this regards about the Mahatattva? लेकिन शास्त्र क्या देखते हैं इसके विषय में, खासकर महत तत्व के बारे में? You could say the size of the Mahatattva, if you're Krishna conscious. If you're Krishna conscious, अगर आप कृष्णा भावना अमृत में हैं, what happens to the Mahatattva? तो महत्त्व क्या होता है? Yes, Prabhu. It comes to the side of the footprint of a calf. So it becomes just like the water contained in the footprint of a calf. Yes, it shrinks down to the size of the amount of water and the hoofprint of a calf. तो प्रभु जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि इतना बड़ा महत्त्व जो है कैसे बन जाता है, गाय के खुर में जितना पानी इकट्ठा होता है उतना बन। Then you realize, oh, it's not exaggeration, Maharaj, it's not exaggerating. It's truth with a capital T. फिर आप जब ऐसे वाक्य पढ़ेंगे तो आपका अनुभव हो ऐसा, आपको फिर आपका साक्षात्कार होगा कि महाराज जो है वो झूठ नहीं बोल रहे थे। So next time you go traveling, सत्य है बड़े सर के साथ। even if you're just going to Vrindavan, just going to Vrindavan. अगर आप वृंदावन में जाते हैं तब भी ये कर सकते हैं। If you're on the road, you're rolling along, you're feeling good. और अगर आप सड़क में जा रहे हैं और गाड़ी चल रही है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, You sing this song. और आप ये कीर्तन कर रहे हैं, Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Pahimam. Krishna Kesava, Krishna Kesava, Krishna Kesava, Rakshamam. कृष्ण केशव
Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Rakshanamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava. So visualize there's your little group singing this song, or even if you're by yourself, you can sing this song. In a car, you're rolling along on the freeway. We call it freeway or flyover. Okay. You say flyover, we say freeway. तो ऐसा सोचिए कि आप अपने सब मित्रों के साथ जा रहे हैं और खुली सड़क है और उस पर आप यात्रा कर रहे हैं. And you can experience, wow, this is really wonderful. अगर आप ऐसा कीर्तन कर रहे हैं तो आप Free. ये तो बहुत अच्छा है. So now, Srila Prabhupada's purport. हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे. Well, I'll read the verse again. While walking on the road, Sri Chaitanya Mahaprabhu used to chant this Rama Raghava mantra. मार्ग पर जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इस राम रागव मंत्र का कीर्तन करते थे. Chanting in this way, he arrived at the banks of the Gautami Ganga and took his bath there. इस प्रकार कीर्तन करते करते वे गौतमी गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्नान किया. The Gautami Ganga is a branch of the river Godavari. गौतमी गंगा गोदावरी नदी की एक शाखा है. Formerly a great sage named Gautama Rishi used to live there on the bank of this river opposite the city of Rajmundari. प्राचीन काल में इस नदी के तट पर राजमहेंद्री शहर के उस पार गौतम नामक ऋषि निवास करते थे. Sorry, it's similar to Rajmundari. It's Raja Mahendri, so I guess it's a different. Yeah, Raja Mahendri. राजमहेंद्री शहर के पास. And consequently, this branch was called the Gautami Ganga. इसलिए जिसके कारण नदी की इस शाखा का नाम गौतमी गंगा पड़ा. I guess that the Raja Mahendri city is not the same as Rajmundari. It must be different. तो मैं ये आशा कर रहा हूँ, ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो राजमहेंद्री शहर है राजमुंड्रिक It's the शहर से same? अलग है. Oh, same. It's just pronounced differently. ये एक ही है लेकिन इसको अलग तरीके से बोला गया. Then that's where our temple is located. और वहीं पर ही हमारा मंदिर भी स्थापित है. And that means that this is the spot then where Ramananda Roy met with Chaitanya Mahaprabhu then. तो इससे ये पता चलता है कि ये वही स्थान है जहाँ महाप्रभु ने रामानंद राय से भेंट की थी. Second place. At that point, the Godavari, उस तट पर गोदावरी जी के तट पर it's about something like 1.5, almost 2 kilometers wide, you know. और वो उस तट पर जो गोदावरी जी का जो वो करीबन And it's 2 किलोमीटर चौड़ी it's a है very powerful river. और वो बहुत ही शक्तिशाली नदी है. I once described to you about the grand opening of the our temple in Rajmundari. और मैंने एक बार ही बताया था कैसे राजमहेंद्री में जो हमारे मंदिर की जब उद्घाटन हुआ था. Anyone remember? किसी को याद है? No, certified Kali Yuga. Or maybe you guys are so new that you just don't remember. तो ये कलयुग का लक्षण है क्या किसी को Well, it was याद very है? ecstatic. It was very ecstatic. Gosh, I don't know how many years ago this was. Maybe 9 years ago or something. करीबन 9 साल पहले की बात है और बहुत ही आनंदवर्धक जो वो कार्यक्रम था. So our temple is located right on the banks of the Godavari. हमारा मंदिर बिल्कुल गोदावरी जी के तट पर बना है. Literally. बिल्कुल तट पर ही बना है. So at the time of the grand opening of the temple, और जब मंदिर का उद्घाटन था there was a huge mega flood. और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गई. So the water went all the way up onto our property. और पानी हमारे बिल्कुल जमीन पर आ गया. Lord Jagannath was to be moved. Lord Jagannath, we had a temple down lower on a lower level, closer to the Godavari. We had an old temple room down there. तो गोदावरी जी के बिल्कुल तट पर हमारे एक पुराना मंदिर का कमरा था. But even though it was flooding, they wouldn't move the deities to the new building until it was time for the installation. They were like, you know the word adamant. They were firm about that. They weren't going to move Lord Jagannath until the
time of installation. तो सब भक्त लोग इस बात के लिए जिद्दी थे कि हालांकि पानी आ गया था मंदिर में और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह भी थे, लेकिन वो तब तक उसको नए मंदिर में नहीं ले जाते जब तक स्थापना करने का सही समय नहीं आ जाता। A funny story surrounding the installation of Lord Jagannath there. और इसमें एक हास्यप्रद कहानी है जगन्नाथ जी की स्थापना के विषय में। So Dr. Swami was coming with a famous safari party, and I was one of the 150 devotees from all over the world, 40 different nations. और जयप्रदा का स्वामी महाराज एक सफारी यात्रा लेके आ रहे थे जिसमें मैं भी था और 40 देशों से 125 लोग। It's really ecstatic pastime of Lord Jagannath. और बहुत ही आनंदवर्धक जो लीला थी भगवान जगन्नाथ की। So we hear, oh my goodness, 150 devotees are coming from all over the world, along with Jayapataka Swami. Wow, Jai! That means we should have Rath Yatra. हमने सोचा कि अरे वाह, जयप्रदा महाराज आ रहे हैं और 150 भक्त लोग आ रहे हैं 40 देशों से, तो इसका मतलब रथ यात्रा होनी चाहिए। One small problem. उन्होंने सोचा कि अरे छोटी सी परेशानी है। I mean, this was his pastime. This was Jagannath's pastime. I mean, they could borrow, there are places all over India where festival time, they borrow Jagannath. There's some traveling Jagannaths also who is Leela is on the road. तो जगन्नाथ जी सोचा ये छोटी सी परेशानी है कि गंगा आ गई है, तो हम देखते हैं वहाँ जगन्नाथ जी की कई लीला है, खासकर जो जगन्नाथ जी यात्रा पर जाते हैं तो वो अक्सर आए लीला करते रहते हैं। Story within a story within a story, like the Bhagavatam, और हम देखेंगे इसी एक कहानी के अंदर एक कहानी, उसके अंदर एक और कहानी है, जैसे At the grand opening of the Penang, Malaysia temple, the octagonal temple, the grand opening of the temple, I was there by the mercy of Krishna. और जब ऐसे ही एक और कहानी हुई मलेशिया का में जब एक जगन्नाथ जी का मंदिर खुल रहा था तो मैं वहाँ पर ही था। So at the grand opening there was Jagannath, Baladev, a bunch of big ones there. और बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी थी और मंदिर 2 meters tall, huh? 2 meters tall. 2 मीटर big ones. लंबे बड़े जगन्नाथ जी थे। Big round black eyes, big eyes. और बे काली आंखें भगवान जगन्नाथ जी की। They were happily presiding over the festival. और वो सब बहुत ही आनंदपूर्वक जो है उस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और बहुत खुश थे। But so I'm attached to those deities because they're so wonderful, so wonderful. और मैं उन विग्रहों से बहुत आसक्त हूँ क्योंकि वो बहुत ही सुंदर विग्रह थे। But I was dismayed because the next day, तो मैं अचानक दुखी हो गया क्योंकि अगले दिन पुफ। No Hindi for poof. He was gone. The next day he was gone. After the festival, he was gone. और अगले दिन क्या हुआ कि वहाँ जगन्नाथ जी गायब हो गए अगले दिन। Well, because they're traveling deities. They're leaders. They're traveling from here to there, and they are restless, as Krishna is restless. And they're traveling from here to there. Next day, had another engagement. So poof, gone. I was really devastated because I look at the altar and empty space there. Maybe they put a picture, But I was devastated because I was really enjoying their association. तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि देखा कि भगवान जो है वो ऑल्टर में है ही नहीं, उनकी जगह ऐसे फोटो रखी हुई है, तो पता चला भगवान You have to know this. If you don't know it already, if you don't have it memorized, write it down. अगर आप याद नहीं कर सकते तो कृपा करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। Somehow or other, just become attached to Krishna. Any way you could do it, but somehow or other you just become attached to Krishna. तो किसी तरीके से ये के प्रकार है ना, हमें कृष्ण से आसक्त होना है। अगर आपको ये चीज याद नहीं रहे तो उसको लिख लीजिए ताकि इसको आप याद कर सकें। So when Jagannath was gone the next day, I was devastated because I had some attachment for him. Very beautiful, wonderful, extremely powerful, very jolly. So naturally, their sudden disappearance was going to cause some separation, तो उसी तरीके से फिर जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ जगन्नाथ जी वहाँ से चले गए और वहाँ पर ऑल्टर में नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा लगा, खराब लगा, क्योंकि मुझे उनसे थोड़ा सा विरह हो रहा था। Going back to Rajmandri, the president could have borrowed some Jagannath Baladeva Subhadra from some temple, but actually it was short notice too, so that's the reason just to snap your fingers and borrow Jagannath. Borrow the Supreme Controller.
you're supposed to make some, he didn't have a whole lot of advance notice, and so he said, oh, 150 devotees coming. Oh, Dad, we'll have to have Rath Yatra then. That'll be wonderful. तो मैं वापस फिर राज महेंद्र के बारे में आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्योंकि अब जगन्नाथ जी की स्थापना होनी थी और वहाँ पर रथ यात्रा के नहीं थे, तो इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं और से जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा के विग्रह प्राप्त हो सके ताकि रथ यात्रा आ सके, क्योंकि जयप्रदा का महाराज 150 भक्तों को 40 देशों से लेके आ रहे थे वहाँ। So it seems it didn't even cross his mind to attempt to borrow Jagannath from some other temple. It seems like it didn't even cross his mind. और किसी के मन में भी नहीं आया कि हम रथ यात्रा के लिए किसी और से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी के विग्रहों को थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं। Because Jagannath wanted to go there and stay. That's why. क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं वहाँ पर जाना चाहते थे और रहना चाहते थे। It's a great place right next to the river. क्योंकि वहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है नदी के पास। So like somebody jumped on an express train to Bhubaneswar and like went down there high speed and quickly got the deities in Puri, you know, big deities also, the same big 1.5 meter tall deities, you know, and brought them back just in the nick of time, you know. तो वे कोई भक्त जो है तुरंत भुवनेश्वर गए और वहाँ से जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी पुरी से वापस आ गए और रथ यात्रा की तैयारी होने लगी। So then it was just before the grand opening. Jagannath Baladev Subhadra, they were already there. I was also there for the installation of Jagannath Baladev Subhadra, very wonderful. और फिर मैं उस दिन था जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी की स्थापना थी, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था। So the time of the grand opening, the temple, it was not fully, but it was waist high in water. और जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मैं वहाँ पर था, मैंने देखा कि जब वहाँ की स्थापना हुई तो I guess they must have consulted. पेट तक जो है पानी था। They must have consulted with Jayapataka Swami. I presume they consulted with it, but devotees refused to move the deities even though the temple room was flooded. तो हालांकि उन्होंने जयप्रदा माँ से सलाह की होगी, लेकिन भक्तों ने जो है वो भगवान को वहाँ से नहीं हटाया, जबकि वहाँ पर कमर तक पानी था। To make the offerings to Lord Jagannath and do the seva, they were wading waist high and Godavari water to serve Lord Jagannath. They were waiting, and like in Mayapur sometimes it happens also for serving Lord Sringadev. Sometimes they use boats in Mayapur, you know. तो जगन्नाथ जी की उनकी सेवा करने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए भक्त लोग कमर तक पानी तक भी वहाँ पर रहकर उनकी सेवा कर रहे थे। जैसे मायापुर में जब बाढ़ आ जाता है तो गंगा जी का पानी अंदर आ जाता है, तो नरसिंह भगवान की भी सेवा नाव में करके से की मदद लेनी पड़ती है सेवा के लिए। On the day of installation, Lord Jagannath was moved up to the new temple. तो इस फिर जब महान के विग्रहों को स्थापित करने का सही समय आ गया तो फिर जगन्नाथ जी को वहाँ से नए मंदिर ले जाया गया। Now, fortunately, they had designed the new temple so that the temple room was on first floor or even the second floor, and so the ground floor was completely flooded. So if they had tried to have, if the temple room had been down there, then it would have spoiled everything. तो अच्छे सौभाग्य से जो नया मंदिर था वो पहले दूसरे मंदिर में था, जो ग्राउंड फ्लोर था वो तो पूरा पानी से भर गया था, लेकिन नए मंदिर में पानी नहीं पहुंचा। But Jayapataka Maharaj made a wonderful observation. जयप्रदा महाराज ने एक बहुत ही सटीक एक चीज देखी। See, right next to the temple property there is a crematorium. उन्होंने देखा बिल्कुल मंदिर का जो जहाँ मंदिर था उसके पास में ही एक शमशान भूमि थी, Owned by the city. जो कि शहर की शमशान भूमि थी। Where Iskcon built the temple, it was also formerly crematorium. और जो जिस जमीन पे So मंदिर here बना and था there, वो भी पहले शमशान भूमि थी। under the ground there might have been some skulls and this and that, who knows. और जमीन के नीचे कुछ हड्डियां और At खोपड़ी least ashes anyways. Ashes. Crematorium means they were burning dead bodies in the spot where the temple was to be built. और वहाँ पर कुछ राख मिलती क्योंकि उसी जमीन पर पहले जो है मुर्दों को जलाया जाता था। So Jayapataka Maharaj's observation was that Godavari came up in the flood just to purify the Iskcon property. Jai! Hare! तो
जब तक महाराज ने ये चीज देखी और इसको कुछ जी, चीज जागो। कही कि अरे वाह! क्योंकि मंदिर जो है शमशान भूमि पर बना था, अरे वाह! इसलिए अरे वाह! इसलिए Godavari, this was Revelation. Godavari Devi, the Almighty, this extremely powerful river, 2 kilometers wide, she came up just to purify the Iskcon land in time for the installation, the installation. तो जब तक हमारे कोई साक्षात्कार हुआ, उन्होंने चीज कही भी कि क्योंकि जिस स्थान पर मंदिर बनना था वो पहले शमशान भूमि थी, तो गोदावरी जो है वो ऊपर आके उस जमीन को शुद्ध कर रही थी जहाँ पर नया इस्कॉन मंदिर बनने वाला। So they had to build a bamboo ramp over the top of the entrance of the canopy of the entrance to the ground floor, and so that everybody had to walk on this bamboo ramp that would take them up to the first floor, you see, because the ground floor was completely flooded. तो फिर भक्तों को क्या करना पड़ा कि उनकी ग्राउंड फ्लोर में पूरी जगह पानी था, तो उनको एक रैंप या उनको एक ऐसा वो बनाना पड़ा जिससे भक्त लोग जो है वो ग्राउंड फ्लोर से पहले मंजिल पर जा सकें। It was a great festival. It was a great festival, a glorious festival, wonderful event. और बहुत ही सुंदर और अच्छा कार्यक्रम। फिर बाद में Later they built a flood wall to try to attempt, but this is kind of not a common flood. It's like once every 40 or 50 years or something like that. What happened right exactly at the time of our temple installation. तो हालांकि इन्होंने एक दीवार खड़ी की थी कि अगली बार अगर कोई ऐसी बाढ़ आती है तो वो पानी से बच सके, लेकिन ये बाढ़ जो है वो असाधारण है, 40-50 साल के बाद आई थी, लेकिन उसी समय आई जब मंदिर की स्थापना हुई। A railway bridge across the river there, right near the temple. और एक रेलवे का भी ब्रिज है वहाँ पर बिल्कुल मंदिर के प्रॉपर्टी के पास में। The trains were instructed to literally crawl about 5 miles per kilometer across that bridge. और जितने भी वहाँ से ट्रेन गुजर रही थी तो वो बहुत ही धीमी गति में गुजर रही थी, 5 या 10 किलोमीटर की रफ्तार पर, क्योंकि पूरा पानी हर जगह था। Because the railway administrators were terrified that the water was so swift. I mean, we're talking about massive. We hear about the waves of the Ganga. We're talking about massive current. Millions of crores of water going high speed. तो क्योंकि वो नदी का गोदावरी नदी का इतना तेज बहाव था, तो जितने भी रेलवे के कर्मचारी थे उनको डर था कि उस बहाव में कोई नुकसान ना पहुंचे, तो इसलिए वो रेलगाड़ी को बहुत धीमी गति से चलने के लिए कह रहे थे। So the railway administrators were terrified that the foundation of the bridge itself was going to wash away. They were paranoid about that. So that's why they told the trains to go very slow to minimize the vibration, for fear that the whole thing would collapse. That we're talking about the mighty Ganga. You see. तो उनको रेल के जो कर्मचारी थे उनको इस बात का भय था कि इतनी गंगा के तेज भाव से जो ब्रिज है वो टूट ना जाए, तो इसलिए जो है वो कुछ सावधानी बरत रहे थे। Now we continue. Srila Bhaktivinoda Thakur says that Srila Kaviraj Goswami has recorded the name of the holy places visited by Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जिन जिन तीर्थ स्थानों पर गए उनका वर्णन तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है। But there is no chronological order of the places visited. किंतु वह क्रम अनुसार नहीं है। However, there is a notebook of Govinda Das containing a chronological order and references to geographical positions. किंतु गोविंद दास की एक किताब है जिसमें भौगोलिक स्थिति के उल्लेख के साथ क्रम अनुसार वर्णन है। Srila Bhaktivinoda Thakur requests the readers to refer to that book. श्री भक्तिविनोद ठाकुर इस ग्रंथ की सहायता लेने के लिए पाठकों से निवेदन करते हैं। According to Govinda Das, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Srimanda and the Gautama from the Gautami Ganga.
गोविंद दास के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु गौतमी गंगा से त्रिमंड गए। From there, he went to Dundirama Tirtha, another place of pilgrimage. और वहां से गुंडी राम तीर्थ गए। According to Sri Chaitanya Charitamrita, after visiting the Gautami Ganga, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Mallikarjun Tirtha. श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार गौतमी गंगा का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मल्लिक अर्जुन तीर्थ गए। So these are the ecstatic travels of Mahaprabhu. और इसी चैतन्य महाप्रभु की आनंद से भरी हुई कुछ यात्राएं। So next time you're rolling down the freeway or flyover, or next time you're on the Jamuna Expressway on the way to Vrindavan, sing this song. तो निष्कर्ष ये है कि कभी आप वृंदावन यमुना एक्सप्रेसवे से जा रहे हो या किसी भी यात्रा में जा रहे हो तो ये कीर्तन जरूर करें। किसी कोई प्रश्न? Questions, comments? कोई टिप्पणी? Yes, Prabhu. Just talk loudly. You can hear you. Maharaj, I went to Nasik. There is a beautiful story why this Ganga is known as Gautami Ganga. There, because of the penance of Gautam Rishi, Lord Shiva agreed to bestow blessings upon him in the form of this Ganga river. What is the question? Maharaj, it is not a question. He is sharing that I once went to Nasik. He is sharing that I once went to Nasik and there is a story why this Ganga branch distributed named Gautami Ganga because Gautam Rishi was doing penance and Lord Shiva became pleased. So Lord Shiva blessed him by having Ganga flowing there. He is sharing that. Very good. तो अजीत ग्रामपुर कह रहे हैं कि मैं एक बार नासिक गया था और वहाँ पर मुझे ये चीज़ पता चली कि गंगा जी की इस शाखा का नाम गौतमी गंगा कैसा पड़ा, क्योंकि वहाँ पर गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे और वहाँ शिव जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। उनके आशीर्वाद से वहाँ पर गंगा जी बहने लगी और उनका नाम गौतमी गंगा रखा गया। Karandala Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jagaguru Sri Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bolo.